Hello students. So students, in my last video, I had told you uh, about this question that there's a block of mass small m, there's a block of mass capital M, and the upper block is given a velocity v naught over the lower block, and ground is smooth. Ground is smooth, although the coefficient of friction between the upper block and the lower block is what? Mu. So you have to calculate that what will be the common velocity of both the blocks when the upper block stops over the lower block. इसे यहाँ पे फिगर में कुछ देर के बाद ऊपर वाला ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव रुक जाएगा. It will stop over the lower block, and at that moment the lower block will be moving. That means both the blocks will have the same velocity with respect to ground. है ना, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक उसके ऊपर रेस्ट पे है. सो दोनों ब्लॉक्स एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं. हमने कैलकुलेट किया था व्हाट इज दैट कॉमन वेलोसिटी, जो कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल देंगे. फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज वी आर टेकिंग दैट द ब्लॉक बोथ द ब्लॉक्स कंबाइनली मेक ए सिस्टम. तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट्स एन इंटरनल फोर्स and there is no external force in the horizontal direction. So in the horizontal direction, the momentum will be conserved. So you see, you have mv naught, you have small mv naught is the initial momentum, that equals to m plus m into v, and v equals to mv naught upon m plus n. This is the common velocity. ये कॉमन वेलोसिटी है जो कि दोनों ब्लॉक्स की हो जाएगी जब ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ गए. Since in my previous video I had told you how to calculate कि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, किस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब तक कि ऊपर वाला ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव रेस्ट पे आ गया है. लोअर ब्लॉक ग्राउंड के रिलेटिव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ऊपर वाला ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया था फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज, बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉज एंड काइनेमेटिक्स. अब मैं आपको यहाँ पे इसी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम. आप ठीक से देखोगे, इट इज स्पेशली टू क्लियर द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड हाउ टू यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम. फ्रॉम whatever frame you want to use, you can use the work energy theorem. But when you select a particular frame in using the work energy theorem, what points are to be kept in mind, I'll tell you. So look at this. मैं सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, applying work energy theorem for the capital M with respect to ground. Right? We are applying what? Work energy theorem for the work energy theorem for the lower block with respect to ground. आप द ग्राउंड रेस्पेक्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे. सो बिकॉज जब तक कि ऊपर वाला ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव रेस्ट पे आया है, उसके पहले force of friction was acting on the upper block in the backward direction, VMG, and the same force of friction was acting on the lower block in the forward direction. अब क्योंकि हम केवल लोअर ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, सो वर्क एनर्जी थ्योरम में इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट यू राइट, work done by the external force, work done by the external force. So force of friction becomes an external force, right? Because this has been applied on the upper block, on the lower block by the upper block. और जब मैं केवल लोअर ब्लॉक को सिस्टम ले रहा हूँ, अपर ब्लॉक इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो अपर ब्लॉक जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स. अब मान लीजिए उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसका ground respect में displacement S1. So you see, mu mg is in the forward direction. S1 is also in the forward direction. So there is the work done by the force of friction, which is an external force
on the lower, and that equals what? This equals to change of kinetic energy. यहाँ पे मैं जब ग्राउंड के रिलेटिव ले रहा हूं तो एफबीडी में भी फोर्सेस केवल ग्राउंड के रिलेटिव होंगे, और मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ग्राउंड के रिलेटिव। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट? हाफ एम v square, where v, the value of v is this, minus c, initial kinetic energy of this block with respect to ground is what? 0, because this was at rest. So you keep the value of v from this equation into this and get the value of what? S. इससे you get the value of what? S1. Now see, I apply the working energy theorem. Apply working energy theorem for the small n with respect to ground. मैं ग्राउंड के रिलेटिव में पाएंगे तो ग्राउंड रिलेटिव सब the only upper block is the system, so force of friction is the external force, और मैं यहाँ पे ये horizontal arching के लिए ले रहा हूँ तो horizontal arching there is only one force, that is what? Force of friction. Is that clear? क्योंकि vertical arching में बॉडी का मूवमेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली कोई चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं है, so we are applying it. The force of friction is in the backward direction. Displacement of the upper block with respect to ground is S2 minus sign, because force of friction is in the backward direction and S2 is in the forward direction. This equals change of kinetic energy. Again, keep in mind what? With respect to ground, आपको ground के relative apply करना है। तो ground के relative जो velocity है अपर ब्लॉक की वो बाद में कितनी है? This value of v will keep from here. Initial kinetic energy was half mv naught square with respect to ground. क्योंकि लोअर ब्लॉक रेस्ट पे था तो जो वेलोसिटी अपर ब्लॉक की लोअर ब्लॉक की रिलेटिव थी, the same was the velocity of the upper block with respect to ground also, right? आप इससे S2 कैलकुलेट कर लोगे, get S2. तो S1 तो लोअर ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव है, S2 डिस्प्लेसमेंट लोअर अपर ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव है। अगर आपको अपर ब्लॉक का और लोअर ब्लॉक के रिलेटिव निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर ब्लॉक with respect to lower is equal to what? S2 minus S2. This equals to what? S2 minus S2. Is that clear? तो आपने अपर ब्लॉक का लोअर ब्लॉक के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। नाउ सी, अब मैं आपको लोअर ब्लॉक का के लिए वर्किंग एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके दिखा रहा हूं। you'll see, आपने ये सॉल्यूशन ठीक से समझ लिया, राइट? लुक एट दिस, this is clear now. Now we are applying working energy theorem for the upper block with respect to lower block. So look at this. So lower block is what? Lower block is a non-inertial field, है ना? Lower block क्या? Non-inertial field. तो मैं FBD बनाऊंगा small m का lower block के relative. One force of friction mu mg in the backward direction. One will be what? Pseudo force, because lower block becomes a non-inertial field. Lower block का जो acceleration होगा mu mg is in the forward direction. Mass is in. So expression A of the lower block will be mu mg upon k, है ना? ये acceleration होगा lower block का ground के relative.
सो इससे नॉन रेशनल फ्रेम। फिर जब आप लोअर ब्लॉक के रिलेटिव अप्लाई करोगे तो आपको इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे की ओर, और अब डायरेक्टली अपर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट लोअर ब्लॉक के रिलेटिव पे हो गया, लोअर ब्लॉक के रिलेटिव अप्लाई करो, सेट इज एस डैश, इसका डिस्प्लेसमेंट एस डैश, एस डैश इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, लोअर। Lastly, apply the theorem. So we have mu and d plus small m into a. I keep the value of a, mu and d upon 15. There's a value of what? A. There's a force in the backward direction into displacement s dash minus sign, because force is in the backward direction and displacement of the upper block with to lower block is in the forward direction, right? So this is the one. ये वर्धन आ गया माइनस साइन, क्योंकि कॉस 180 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, देखो ये डिस्प्लेसमेंट लोअर ब्लॉक के रिलेटिव है और डायरेक्टली हम थ्योरम लोअर ब्लॉक के रिलेटिव अप्लाई करें। सो व्हाट विल द चेंज इन द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में जब आप काइनेटिक एनर्जी लोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो किसके रिलेटिव लोगे वेलोसिटी? लोअर ब्लॉक के रिलेटिव। तो जब अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव रेस्ट पे आ गया है तो उसकी वेलोसिटी लोअर ब्लॉक के रिलेटिव क्या होगी? जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक, दैट विल बी व्हाट? हाफ mv नॉट स्क्वायर। क्योंकि लोअर ब्लॉक रेस्ट पे था तो जो उसकी वेलोसिटी अपर ब्लॉक की ग्राउंड के रिलेटिव थी, वही वेलोसिटी उसकी किसके रिलेटिव होगी? सेम वेलोसिटी इसकी होगी विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक। तो लोअर ब्लॉक के रिलेटिव पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, लोअर ब्लॉक के रिलेटिव बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, इससे आप डायरेक्टली एस डैश कैलकुलेट कर सकते हो। आई स्पेसिफिकली गिव यू दिस एग्जांपल टू क्लियर द फैक्ट दैट कि जब आप एक नॉन रेशनल फ्रेम से अप्लाई करते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको स्यूडो फोर्स भी लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, स्यूडो फोर्स भी एक एक्सटर्नल फोर्स मानोगे और उसका वर्डन भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में। इज दैट क्लियर? सो कभी भी अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम एक नॉन रेशनल फ्रेम से अप्लाई करनी पड़ती तो हाउ टू अप्लाई इट, दैट आई राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सॉल्यूशन फ्रॉम द, जबकि हमने ग्राउंड फ्रेम से दोनों के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की, राइट, और तब ये सॉल्यूशन था। और जब आपने लोअर ब्लॉक के लिए अपर ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की, लोअर ब्लॉक के रिलेटिव, दिस वाज द सॉल्यूशन। सो जब आपको एक नॉन रेशनल फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, यू कुड अंडरस्टैंड दिस, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, जो कि रिलेटिवली यू विल फाइंड कि दैट्स ए better kind of example and that will make some more concepts clear. Alrighty students, all the best. So I'm just stopping this video now.